राम जेठमलानी को देश और दुनिया में कौन नहीं जानता। ये 93 साल के ऐसे युवा हैं जो 75 साल से वकालत करते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनके लिए सारे विशेषण फीके पड़ जाते हैं। अपनी बेबाक राय रखने और किसी से भी टकराव लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य श्री राम जेठमलानी से आज उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका बड़ा पुराना संबंध रहा है और ये लव हेट रिलेशनशिप चलती आ रही है। कभी आप चले जाते हैं, फिर आप छोड़ आते हैं, फिर आप मोदी को प्रधानमंत्री में बनाने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। मैं अपने विवेक के अनुसार ख्याल धारा रखता हूं और फैसला करता हूं। जनता पार्टी टूटी थी तभी बीजेपी बनी और मैं बीजेपी का पहला वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये आजकल के जो लड़के हैं, अरुण जेटली और ये, इनको तो कोई जानता भी नहीं था इस जमाने। और मैं कोई ताकत और पॉलिटिकल पोजीशन उनके पीछे नहीं था। उसूल की बात थी मेरे लिए। खैर, मैं बीजेपी का वफादार मेंबर रहा हूं। कोई भी मेरे ऊपर आंगुली उठाकर ये नहीं कह सकता कि मैंने बीजेपी के साथ कोई भी ऐसा बुरा बर्ताव किया, उसके साथ यहाँ कोई गद्दारी की। और मैं समझता हूँ कि मैंने बीजेपी की और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं, इन सब की मैंने सेवा किया है, मगर उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आखिर वो भी ज़माना आया कि बीजेपी की सरकार बनी। सरकार बनी तो मेरे को मिनिस्टर बनने का शौक नहीं। मैं अपने वकालत में मशगूल था, लिखने पढ़ने में मशगूल था। मेरी हॉबी है कॉलेजों में लेक्चर करना और स्टूडेंट वर्ल्ड, जो यंगर वर्ल्ड है, यंगस्टर्स का, नौजवानों का, उनके साथ मेरा ख़ास उसके साथ फ़र्ज़ है और मैंने उसका फ़र्ज़ पालन किया है। और the youth like me and I love the youth. That is my strength, that is my satisfaction. सारी हिंदुस्तान मानती है, सारी दुनिया मानती है कि वकालत में मैंने वो पोजीशन ले लिया है जो मेरे को मिनिस्टर बनने की कोई चाहना नहीं। My clerk gets the salary of a minister. So I don't want to be a minister of anybody. अगर मुझे अटल जी ने मिनिस्टर बनाया, मैंने नहीं कहा था कि मेरे को बनाओ, मगर मेरे जो दोस्त थे उनको ये ध्यान में आया कि राम जेठमलानी को कैसे बाहर निकाल रखते हैं, तो उन्होंने शायद कुछ इनके ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी द कंपनी ऑफ यंगस्टर्स, टीच लॉ, आई एम प्रोफेसर एमेरिटस। 2010 दे इनवाइटेड मी टू जॉइन द पार्टी। क्यों इनवाइट किया मुझे पीछे मालूम पड़ा। दे वांटेड to help Amit Shah, Amit Shah, who was a friend and accomplice of Modi. केस चलते थे उसके ऊपर, मर्डर केस था एक। They wanted me for that purpose. That is why they invited me to become a minister. मैं मिनिस्टर तो बना, मगर आई हैव रिकॉर्डेड इन माई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस
that so far as I am concerned, you know my views on every subject. You have no right to change them, but I have a right to change your views. It is on this understanding that I am becoming your. I accepted it. I worked for Amit Shah. उसी दिन से ये अंदर साजिश चली, अरुण जेटली, LK आडवाणी, ये सब आपस में मिल गए. क्यों? Why? Not that they were friends of one another, but they had one common desire. Each wanted to be the Prime Minister of this country. With this ambition, they were united. Otherwise, they were enemies of one another. Sunday Garden में I wrote my piece, in which I said that, Mr. Modi, congratulations on your spectacular success, and I am very proud that I have some small contribution to make to your success. But I am writing this to tell you that I am living in the departure lounge of God's airport. I want nothing from you, and nothing means nothing. Now fulfill your promises to the people of India. ये मेरे को एक आकाशवाणी आई जो मैं ये आर्टिकल लिखा, नहीं तो ये हरामजादे सब कहते हैं कि इसको मैं मिनिस्टर नहीं बनाया तभी ये झूठ बोल रहा है. क्या देखो कुदरत है. आजकल केस चल रहे हैं, कभी न कभी नीरज कुमार को मैं जेल में भेजूंगा. दो इज अ वेरी वेल्दी मैन, he has a big bungalow, biggest bungalow in London, where all these Arun Jaitlys and others have enjoyed hospitality. Ostensible reason जो मेरे के expulsion का दिया है कि he tried to interfere with the appointment of CBI officer. मेरा रसीदार लगता है, या अशोक अग्रवाल को मैं CBI officer बनाता था. I said that this man is a rascal, he should not be. Okay. All this is going on, and today I am amazed that after the day on which the election results were announced, Modi has not even taken up the phone once and thanked me that, Ram, thanks. He is an ungrateful rascal, and I hope you will have to repeat these words on my interview. Don't delete them. And he will soon see the results of the evidence which is coming up. The first piece of evidence I want to tell you now. He promised during the election campaign के अंदर उन्होंने पब्लिक को कहा बार बार हर लेक्चर में कि ये जो $1,500 million means 90 लाख करोड़ रुपए फॉरेन बैंक्स में है, मैं ये वापस लाऊंगा और हर एक गरीब के घर में 15 लाख पहुंचाऊंगा. This is his election. Every lecture that he delivered. Well, after 2 years, not $1 has come, not 1 rupee has come. The German government paid a bribe of $475 million to an employee of the Liechtenstein Bank in Switzerland. And they got 1,400 names of rascals, criminals, biggest criminals of the world. And the Swiss Bankers Association made an announcement that the majority of the names are of Indians. 2008, the German Chancellor made a public announcement that we are willing to share this information with any friendly government that wants it. Now I want to ask all of you present here, after hearing this kind of a German offer, what would the government of India do? And what would an opposition in India do? The opposition was Arun Jaitley.
and Modi, the party in power was still the Congress. Both did not ask the Germans to give the names. I went to the Supreme Court, fought the case from 2009. Not one help was received from the, of course, the Congress government gave no help. But neither did I get any help from these rascals who are now ruling India. I call them rascals. They have no other better word for these rascals. Acha. Now, जिस दिन मोदी के गवर्नमेंट का स्वेरिंग सेरेमनी था, उस दिन उसी गवर्नमेंट का सोलिसिटर जनरल अंडर हिज कवरिंग लेटर, in compliance with the order of the Supreme Court, I told them that supply me the documents, the evidence by which you have tried to get names from the German government. They said, no, we have approached the Germans, they have not given us the names. They delivered to me under a covering letter 17 letters. मैं उनका एक दो लेटर आपको दिखाता हूँ, आप फोटोग्राफ दिखाओ कि ये जो फोटोग्राफ है, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर जेटली and the photograph of this Prime Minister of India called Narendra Modi. In each letter, they scored out the name of the author of the letter and the addressee of the letter. बाकी लेटर दिखाएगा, मगर एक जगह नाम तो निकाला, मगर एक ईमेल एड्रेस का तो भूल गए. मैं वो ईमेल एड्रेस निकाला. That email address turned out to be the email address of a madam called Anita Kapoor, who is the well-known friend of Mr. Chidambaram. She was the CBDT की chair. And this is not an address between the government of India and the government of Germany, but an address of an Indian department to a small tax office in Germany which deals with only double taxation avoidance treaty. Now I want people to understand what this double taxation avoidance treaty is. Double taxation avoidance treaty compels an honest businessman, an honest taxpayer, to pay tax in two different countries on the same income. I am an Indian, I earn money in Germany. The Indian government is entitled to tax me on the whole income. The Germans are entitled to tax him on the ground that he is making money in Germany. So to avoid this double taxation, give some relief to honest taxpayers. This office has nothing to do with the corrupt officers. Anyway, Chidambaram's son is now being dealt with, but Chidambaram is still out. One of these days, if I am alive, I will see that both Chidambaram and Arun Jaitley go to jail for this great fraud on the people of India. Doesn't Arun Jaitley know of this correspondence? He inherited this whole department. And the other side, Chidambaram's man came and gave it to me on the day when their new government was coming, because they thought that Arun Jaitley may be loyal to Mr. Jethmalani and he may give it to him. But they didn't know that he is himself a rascal. What is this Modi? What is this? And the party president ने कह दिया कि all talk about black money was an election jumla, a joke. I said, now I'll tell you the reason. That I am a highly educated person. I practiced law for 75 years. I know the crooks of the world. I know the good people of the world. With all my experience and education, Modi has made a fool of me.
He made me believe that he was serious about black money being recovered, which he was not, because now his party president has told you that it was all a joke, and he has not controverted it. He has, on the contrary, given Amit Shah a second term. So I said, they are cheats. They are conspirators in cheating you. And so much of a conspirator is also Arun Jaitley. Why did he keep quiet all these times? And I said, now I must tell you that this statement of the party president is a confession that we cheated you and got your votes. And I have therefore to make a confession that I have helped Modi to cheat you. I have come to seek your forgiveness. I don't want to meet God with guilt on my head, and I have come to seek your pardon. Please give it to me so that when I die with a clean conscience. And what happened to the BJP in Bihar? It will happen to them again and again. They have cheated the army. They promised OROP. They completely let them down. The army campaigned in Bihar against them. Retired widows and children. And Modi is not going to be a prime minister after another 2 or 3 years. Be sure about it. Whoever might become, Modi is out. And Modi and his accomplices are going to be out. I will see to it that they do not ever come back in this country. So, Bhaiya, this is the state of affairs. What have they done? What have they done to remove corruption? Nothing. What have they done to put honest people in jobs? Nothing. You get votes on the ground that the Congress has cheated this nation for so long, but you have been cheating the people by making, that conspirator Verma has now filed an affidavit in the High Court saying that I was persuaded by the CBI officer Neeraj Kumar and his Ramanish. They have made me file this false affidavit. All this is a joke. This document was not created here. It is not a forgery by anybody in India, nor have we planted it. I was compelled to say it. So this is the state of affairs, and you owe it a duty to the people of India that you should speak the truth, nothing but the truth. Already I must tell you, and I am ashamed that the Indian press has been bought by Mr. Arun Jaitley. Why did Modi make him a candidate from? What for that he made him a candidate from Amritsar? I wrote a letter to him that you have set up Mr. Arun Jaitley as a candidate from Amritsar. I have repeatedly told you that he is a crook, but you have now again put him up. Now the difficulty will be that therefore I will not go to Amritsar, because that will mean I should hurt you, and I don't want to hurt you, even though you have hurt me already. But be sure that he is going to lose, because Mr. Modi, you have done nothing for the Sikhs of Punjab. I have, and I enjoy their love and affection, and no Sikh is going to vote for this crook of yours. It happened. He lost by 1,25,000 votes. If they don't understand, please educate the people of India that even the press has let you down. Major newspapers will not publish my articles. My own paper, the Sunday Guardian, in which I wrote in April a long piece asking questions from Mr. Arun Jaitley, that please answer these questions, because if you don't answer these questions, then you are a cheat and a crook. My article, which I usually sent in
the last 5 years, on Sunday morning when I saw the paper, that space was occupied by an advertisement. I was the chairman of the board. This is what happened to the chairman of the board of Sunday Guardian. And I resigned on that day, and I got in touch with members of the press that please, will you publish my article? Do you know that they had so arranged with the press that the press was not prepared to publish my article because they had expressed instructions that Mr. Jethmalani's article should not appear. Ultimately, the Indian Express was the only paper which published my article. They published it as a paid advertisement which cost me 13 lakhs. But I published that article. What kind of people do you have in this country? अरे भाई साहब, हम लोग आपका 100वां जन्मदिन मनाएंगे, तो आपको कुछ लगता है कुछ काम अधूरा रह गया है अभी जीवन में करने के लिए? बस अभी मेरा तो यही काम रह गया है बाकी, एक इन हरामजादों को जेल में भेजना, which I will inshallah do. आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है भाई साहब? First of all, it is the act of providence. Second, I hope it is the good destiny of India. I get up in the morning and pray to God. I said, God, please give me 2-3 years more. See that I accomplish my one object, that will be my last act of service to the people of India. एक भाई साहब, आपने जीवन में बहुत पैसा कमाया है, बड़े बड़े केस लिए, इतने पैसे का आप करते क्या हैं? You are very much mistaken. I have made money at the bar, but I have made money from 10% of my clients. My 90% work is still free work. I charge crooks, and crooks who are rich, and I am entitled to do that. गुजरात में आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ का हिंदू मैंने कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। मैं पहले गुजरात में जब आई तो कर्णावती आई, जिसको आजकल अहमदाबाद कहते हैं। उसके बाद में इधर आई तो 2 दिन में मेरा व्यू जो है, जो परसों था, वो और स्ट्रेंथन हुआ कि गुजरात एक फियर स्ट्रिकन स्टेट हो गया है, भय से भरा हुआ। ये नरेंद्र मोदी की देन है। हिंदू समाज की रक्षा की जो व्यक्ति बात करता है, आज कितने हिंदू हैं जो वास्तव में कहीं से भी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनकी कोई आज तक कोई पूछ परख नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली जैसे वकील से पूछूंगी कि क्या तुम कभी इन निर्दोष लोगों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हुए सुप्रीम कोर्ट में? जो लोग दोषी हैं उनको तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर लोग फंसे हैं इन मामलों में, क्या उनके बारे में कभी नरेंद्र मोदी ने फिक्र की? कभी अपने मित्र अरुण जेटली से उनके बारे में कभी बात की? तो फिर हिंदुत्व के दावे का मतलब क्या निकला? जब साधुओं की हत्याएं हो रही हों, जब औरतों के गले कट रहे हों और बलात्कारियों का पता नहीं लग रहा हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये 2 बातें हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूं, मैं उनको 73 से जानती हूं, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है, और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ओवरड्राफ्टिंग था वो ठीक दुगना हो गया है। तो विकास कहां हुआ? विनाश हुआ। स्त्री भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां हुआ?
इसलिए ना हिंदुत्व, ना रोटी, ना राम ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिले। को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए, भाजपा की थी 89 तक कि लोग हमको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे। चिंतित है, साधु को डरा नहीं सकते आप, लेकिन साधु भी समाज के लिए अपना कंसर्न तो रखता है, दे आर वरीड। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसा शोक और ऐसा भय, मतलब ग्रीफ और फियर मैंने खुद गुजरात में नहीं देखा कभी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष इसलिए तो रखा है। मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है, ये मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है, और इसलिए हवा भी आपको ही निकालनी